ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. अभी क्या सुनाऊं? Now what shall I say? इतना मीठा बाबा है। Baba is so sweet. संगम युग है। Now we are here in the confluence age इतना बड़ा परिवार है। and we are staying with a very big family. बचपन के दिन याद आते हैं। I remember the childhood days. हमारे बचपन के दिन। My childhood days. I remember my childhood days. पता नहीं था इतनी वृद्धि होंगी। I didn't know that there will be so much of growth in the Brahmin family. इतनी वृद्धि को देख By looking the expansion of the Brahmin family, प्रभु लीला को देख by looking at the acts of God, कैसे कहां से चुन चुन करके माला बनाई है। चुन चुन करके you know माला that बनाई है। Baba, from where he has selected everyone and have made the beads of one rosary. हमारी एक सखी है बहन, वो ये गीत बहुत अच्छा गाती थी। There is one friend of mine, she used to sing a very चुन चुन के beautiful माला song बनाई। that Baba selected and made all the beads to be threaded in one rosary. करोड़ों में से कोई, वो तो ठीक है करोड़ों में, पर ये नहीं पता लाखों बाबा के बचे होंगे। Only a handful out of multi-million is okay. But I didn't know that लाखों there में is से a मैं lot कहाँ of हूँ। expansion. There are lakhs of वंडरफुल Baba's ब्रह्मा। children. So where I stand in between lakhs of people, दुनिया में करोड़ हैं, there are crores of human उसमें कोई beings in the लाखों निकल world. आए। लाखों बच्चों को देख, Looking हर at the एक अपने crores आप को of देखे। people, I should see myself as where do I stand. देखना हो, मुरली बहुत अच्छा दर्पण है। If you want to see आज की yourself, मुरली तो Murli is a very beautiful मैं mirror. समझती हूँ कितना स्पष्ट बाबा ने सुनाया है। In today's Murli, Baba spoke everything very clearly. अपने बगीचे को देख, हर एक में कितनी रूप रंग खुशबुएं। Baba today saw the gardens. इसमें भी देखा गया है। Everyone are different flowers with a different fragrance. बाबा को गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है। Baba always सबसे अच्छा likes to गुलाब का फूल, have बल्कि कितने भी फूल the हो गए। rose flower. गुलाब का फूल जैसा है सुंदर रंग, Baba used to like the rose ऐसी है flower. खुशबू। Its color is also beautiful as रुहानियत its तक की है। fragrance is. तो एक जगह ज्ञान सरोवर में लिखा पड़ा था, So it is written in Gyan गुलाब के फूलों Sarovar, का बगीचे में where we हमको enter into परिवार the से अलग मत garden. करो। समझा मेरी बात? परिवार से फूल का, गुलाब का फूल मुझे अलग मत करो। As don't make me separate अगर एक फूल गुलाब का from the निकालेंगे bouquet of बेचारे flowers. को So it is mentioned while entering the garden कहाँ or रखेंगे, क्या in Gyan करेंगे? Sarovar. शोभा होती है, Because the beauty is भले साखी होकर मैंने देखा with the है, flower.
लंदन में भी GRC जो है ना, उसमें भी गुलाब के फूल बहुत अच्छे हैं। In London, in सब एक GRC, जैसे नहीं होते हैं, the rose flowers थोड़ा are फर्क very होता है, beautiful to look at. थोड़ा फर्क होता है। Not all रहे are गुलाब का, alike. Everything is a rose, but still it has its own fragrance and it तो ये has रोज its गार्डन own color. देख, And this is a garden too. बाबा ने ऐसा And by looking at this garden, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहा है। now Baba has come है कांटे, to change दुनिया the में जहाँ तहाँ कांटे ही लगते हैं। thorns of forest into the garden of flowers. कांटे के जगह फूल The इतना whole अच्छा world है, is a forest. कोई कहेंगे कांटा, अरे कांटा क्यों देखता है? What we would say, तो we नीचे would चला say जाए, that this flower is so beautiful, या but निकाल दे। still it has thorns. So we take out the thorns from that रूहानियत stem. को देखो, And so Baba also says, कश्मीर को देखो, look at the spirituality. Take the fragrance रंग भी from बहुत अच्छा है। everyone. तो संग का रंग You're all colored in a very good company. बाबा ने इतना सुंदर बगीचे को, And Baba has given a very good company. रूहानियत तब बाबा से, And this is Baba's beautiful आत्मदृष्टि से, garden. वृत्ति से देखो कितना अच्छा लगता है। So have spirituality in your attitudes and just look as how the world seems to be. विचार करेंगे First you have to check your awareness वृत्ति or से your दृष्टि। attitude. Which one? पर अगर दृष्टि से हमने किसका अवगुण देखा, वृत्ति में चला गया, And if in case we look something else देखा with दृष्टि this से, eyes and that अंदर वृत्ति actually में चला goes गया, into the attitude, तो क्या हो गया? then what happens? इसे दृष्टि, And so, first, drishti should be changed. सदा सुखकारी, Let drishti give happiness for तभी होगी जब ये always. हमारी वृत्ति And it can happen only when our की लाइन attitude क्लियर, is completely changed and our intellect is very clear. मनोवृत्ति साफ, Our mental मनोवृत्ति attitude साफ, should be very clean. कैसे? तो कल परसों से पहले भी यहाँ बात निकाली है, मुझे अच्छा लग रहा है From day after, जो बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया। from day before tomorrow, I like this very आत्मा much, क्या है? as Baba spoke many a times आत्मा क्या about है? soul. But what मन is the बुद्धि संस्कार soul? है। The soul has the faculties of mind, intellect, and तो छोटी सी, sanskars. उसमें सारा रिकॉर्ड भरा पड़ा है। Soul is very tiny, but still all the records of अभी 84 birth is बाबा recorded ने in मन it. बुद्धि से मन को शांत कर दिया, बुद्धि को शुद्ध बना दिया, Baba has made our mind peaceful, intellect pure, शांत, बुद्धि शुद्ध श्रेष्ठ। intellect has become संस्कार pure and कैसे बन रहे elevated. हैं? And how our sanskars are Wonderful. becoming wonderful. मन बुद्धि के द्वारा Through mind and the intellect, पहले वाले संस्कार कर्म बंधन के हिसाब किताब के we have to सारे settle बदल गए। our karmic accounts through मन sanskars. बुद्धि ने बदला, The mind and intellect has changed the मैं मेरा को sanskars. समझ के बदल गए। We have known nicely मैं about the बोलने में consciousness भी of I and mine. कितना फायदा हो गया। So when we speak mine and I, there is a big contrast. जब मन मना भाव कहते हैं, We say man manabhav. मन मना भव,
Manmana Bhav. मध्याजी भव. Then it is Madhyaji Bhav, the inheritance. मध्याजी भव में लक्ष्मी नारायण सामने आता है. So when we speak Madhyaji Bhav, Lakshmi Narayan comes in Simple front है. of us. That is the aim and objective, and it is very simple. बुद्धि में और सब कुछ नहीं है. Nothing is there in the intellect. लक्ष्मी नारायण सामने है. Lakshmi and Narayan are present in front of us. भले It is our aim एक and बारी बाबा object. ने कहा, Once Baba had said, हम लोगों ने कहा, "पर लक्ष्मी नारायण तो आप बनने वाले हो मम्मा बाबा." and once we हम too सामने said क्यों that रखे? Baba and Mama, कैसे you would become Lakshmi and कोई Narayan. सुनता है ना, ये पता है ना, So we raised up this Lakshmi question Narayan. as Baba and Mama, you कौन are the बनेंगे ones who सत्युग will में? become Lakshmi Mama, and Baba Narayan in the future. पर हम क्यों रखें? But why we have to keep that aim and objective in front of us? क्या फायदा? What is the benefit for us from it? कोई जवाब देंगे? Can anyone give the answer for this? क्यों क्वेश्चन निमित्त मात्र पूछते हैं, अंदर में आंसर है. I'm asking you the question, but I really know that you are having जैसे the बाबा answers ने within आत्मा का you. ज्ञान दिया, As Baba has given us the knowledge of the soul, मेरा बच्चा हो, Baba said, you are my तो children. अच्छा, उस आत्मा के ज्ञान से कोई हमको खुशी नशा नहीं आया. Only by listening to the knowledge of the soul, I didn't have any बच्चा happiness कितना or है? intoxication. But when तो Baba पहले said, पहले you're हम my लोग child, you're my इस children, बातों के गहराई में जाते थे. then we had a अभी lot आप of लोग जाते हो नहीं intoxication to जाते हो? listen to Baba's knowledge. पहले मैं अपन को आत्मा समझूं या पहले परमात्मा बच्चा So first समझूं. we have to go into the depth of these points as whether I योग में consider बैठते myself थे. to be a soul first or आत्मा shall I समझ के consider परमात्मा का myself बच्चा हूँ. to ऐसे be Baba's easy है children. या परमात्मा का बच्चा हूँ. वो easy So which है. one is right? Which one has to come क्या first? easy है? Should I consider myself to be a soul first आत्मा or समझने में टाइम लगता है. should I consider myself to be Baba's child? क्यों देह मान में Because to रहने की consider आदत है oneself आत्मा to को. be a soul, it takes little time. तो देह मान और देह मानी And there is a vast difference between body स्थिति का consciousness and contrast. soul consciousness. कहाँ देह मान The कहाँ contrast देह of the मानी. two stages where body consciousness is and where soul देह consciousness मानी is. स्थिति में बिल्कुल न्यारा प्यारा. In the soul conscious stage, you are देह मान में completely न्यारा detached प्यार and loving. And in body कोई न कोई consciousness, कहाँ न कहाँ मेरा पन की लागत है. there is the connection of the consciousness of I and पर mine बाबा ने somewhere. कहा, ऐसी संगठन की शक्ति योगज्ञ हो And therefore, Baba many a time says that there should be the fire of कमजोरी yoga खत्म हो जाए. in the gathering so that all the sins will be burnt into ashes. इसलिए परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा की. Consider yourself that you are the बुद्धि में family ऊपर of वाला. God. Let your intellect move up above. कौन कह रहे मैं आत्मा पर हूँ परमात्मा की ना. I am a soul, but I belong to the देह Supreme समूह Soul. दुनिया पराये है, मेरे नहीं है. The body and the bodily being is मेरा removed. तो एक दूसरा न कोई. No one is mine, तभी जब and मेरा nothing is एक mine. है, Mine is only तो one. मैं कौन हूँ. Who am I then? तो ये मुक्ति और जीवन मुक्ति मैं कौन. पहले मुक्ति. First, we are moving to the land of liberation, and then we come to the liberation from life. इसलिए लक्ष्मी नारायण को सामने रखते हैं ना. And therefore, we keep the photo of जैसे Lakshmi मेरे Narayan in हमारे front of ब्रह्मा बाबा us. ने एक बारी कराची में कुंज भवन था जहाँ In मामा Karachi, और बहनें there is Kunj जो Bhavan, दादियाँ हैं ना सब where इतनी Baba, कुमारी Mama, रहती थी. and some dadis used to stay बाबा there. सीढ़ी उतर रहा था.
धीरे धीरे Baba was very gradually coming ऐसे down the उतर रहा था, stairs, हम देख रहे थे and we all were looking at that. कैसी सीढ़ी उतर है। As how Baba is फिर मुस्कुरा के पूछा, coming बाबा down the stairs. जैसे कल परसों मुरली में था, ब्रह्मा बाबा को मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, ये And it सदा was in करिए yesterday's स्मृति में Murli था। that Baba frequently had this awareness that I am the one who will be becoming Sri Krishna in the future. दिखाई पड़ता था, And it would be visible in Baba's activities. था बेगरी पाठ डायरेक्शन ऐसे दिया, And at the time of beggary part, Baba gave the direction. बाबा क्या नारायण बनने वाला है उन्हें, संस्कार है And नारायण he said for himself that तो I नक्शा have the नारायण sanskar of कहेंगे। becoming Sri Narayan. So I am the one who will become Sri Narayan. हमको भी बाबा अपने समान बनाने चाहता है, Similarly, Baba also wants we children to जैसे वो become बनना equal है to ना तो him. सिखाता है, मैं जैसे बनना तुम भी Not बनो। only Baba is becoming, but Baba also teaches us as what we have to become. यही राजयोग है, And this is Raj Yoga. यानी मन कर्म इंद्रियों के अगर वश है तो That गुलाम is, है, राजयोग नहीं है। राज if mind is influenced by the physical organs, then that means that you are not a Raj Yogi. अगर मन कर्म इंद्रियां ऑर्डर में है, And if the mind and the बिल्कुल ऑर्डर physical organs are under full control, तो राजाई नशा चढ़ता है। then there will be the intoxication of receiving the inheritance of the kingdom. गीता में पढ़ते थे, We used to read Gita. मैं तुमको राजाओं का राजा बना रहा हूँ, God has mentioned that I will make you the king of kings, but we were unable to understand it. राजाओं का राजा बना रहा हूँ, Baba now says that through Raj Yoga I make you the king of kings. ये पता नहीं था। And it was not known earlier. ये राजाएं जो आजकल दुनिया में है वो भी समझते थे दान पुण्य करने से राजाएं बने हैं। The worldly people who are now having their kingdoms, even they do think that because of donating they have become kings. They have their own intoxication. भगवान ने दिया है, पर हम राजाओं के भी राजा। But God has now told us that we are the ones who will become the king of the kings. पवित्रता योग से, पवित्रता से योग से, Through purity and through the power of yoga. First is purity. पवित्रता को खत्म, Impurity should be finished. नाम निशान नहीं। There should be no name and trace of impurity. तो योग किससे लगा? So with purity and with the power of yoga, बनाने वाला कौन है? because we have our yoga with the one Father, and we know what He is making us into. कौन क्या बना रहा है? We know who is making us into and what we are becoming. संकल्प को पक्का करते थे। So we have to make this thought very firm for us. क्या बना रहा है, दिखा रहा है। Baba is making us into, but what He is making us into, अनुभव करा रहा है। He is making us to experience. And even me have to become equal to Him. ये संकल्प जैसा बनना है, बड़ा बनने का भावना से बन जाती है। The thought I have to become this भावना है मेरी, will make you to become बनाने that. वाले में है, समय में भी There is है। power in Baba to ये make us समय के into सिवा और कोई समय नहीं आने वाला है। as what He wants us to यही become. टाइम है। The time has also got its own बनाने power. वाला बना रहा है। Now the Father is making क्या us बनना है वो into दिखा रहा है। as what He has to कैसे make us बना रहा है वो into बता रहा है। and how He wants to make us into. सिर्फ हमको बनना है। But only thing is we have to become. किसको That's ये it. स्मृति है, हाथ उठाओ। And the one who has this awareness, raise your hand. नहीं उठाते हैं, नहीं उठाते हैं ना। Not lifting your hands. Why? प्लीज अब संभालो ना, समय चला जाएगा ना। So please don't waste your time. बनाने वाला The भी time is just passing by. मुफ्त लाल कंपनी में बना रहा है।
So we are not sitting in a Mufatlal एक बारी company, बॉम्बे में था, means free of cost company. मुफ्तलाल कंपनी वाले से कनेक्शन हुआ था हमारा। Once Baba had a बड़ा प्यार से connection with the बाबा को बड़ा Mufatlal प्यार से company. देखता Those था। Mufatlal companies are called as free cost company. तो बाबा मुफ्तलाल So Mufatlal कोई is पैसा नहीं, कुछ free ले रहा है, cost, means nothing to कंपनी दे give, रहा nothing to है। take. So company is मुफ्तलाल giving. कंपनी में बिठा रहा है, कंपनी से। जो कंपनी के मालिक होते हैं, नशा होता है बहुत। So we are sitting in the company. So the one who are the managers or the workers in the company, they have their own कैसी ऐसी intoxication. कंपनी मिली है। They no need to worry because everything is going on free of cost and the ऐसे company is बाबा paying को for them. प्यार करें या प्यार में लीन हो जावें। And so should we भक्ति मार्ग में get absorbed in Baba's इंग्लिश शब्द है love? लव लीन, लव में लीन। हम गीत गाती लवलीन हो जाऊं, There is लवलीन a हो word जाऊं, love लवलीन, lean. पता ही नहीं लवलीन क्या। So we didn't know before as what is love lean. Love उसके lean प्यार में means समा जाऊं। to be absorbed in his love. योग क्या है? So what is yoga? योग क्या है? What is yoga? बाबा के प्यार में समा जाना। To absorb in Baba's love is yoga. इतने हजारे लोग जो आते हैं, Thousands come here. मैंने समझा आज कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा। And I thought today आज my भी class यहाँ will be बैठे in the हैं, conference hall. But today डायमंड also we हॉल are में। sitting here in Diamond Hall. डायमंड हॉल इसलिए बना है, सदा ही डायमंड हॉल में बैठे हैं। Diamond Hall is जैसे डायमंड हॉल made में पाँव रखा है, जूडी to है become यहाँ? like diamond. जूडी नहीं है क्या? So Sister Judy is not here. बहुत अच्छा अनुभव लिखा है। She has written यहाँ a रहने very का, मधुबन में beautiful रहने का, यहाँ experience of रहने staying का। in Madhuban. हाँ, सब ठीक, कोई बात नहीं। Okay, it's परंतु okay. मैं बताती हूँ, लक्ष्मी नारायण को सामने रखने से So by keeping the picture of Lakshmi Narayan राधे कृष्ण को भी नहीं रखना। in front of us, not to देखेंगे keep मुरली Radhe and देखेंगे, Krishna. यहाँ से नाच रहे हैं, रास कर रहे हैं। Radhe and Krishna are just लक्ष्मी having the नारायण flute सभ्यता in से their परे hand है। and dancing both together. But we should have the picture of Lakshmi and जब Narayan. लक्ष्मी नारायण का चित्र बॉम्बे में बन रहा था, And once Lakshmi Narayan picture कृष्ण was का चित्र बाबा ने made in बनाया, Bombay, मुरली हाथ में, पाँव इधर, the picture of Shri Krishna ये बाबा ने बनवाया था बॉम्बे में। got it done by लक्ष्मी Brahma नारायण का चित्र Baba जो बन रहा था, मम्मा को बोला तुम बनाओ। in Bombay. And Mama was told to make the picture of Radhe and बनाने वाला Krishna. बनाता था, पर मम्मा ऐसा दृष्टि देती थी। But the one who was the artist, he used to make the picture, but Mama used to give drishti on भले that. है सत्युग में, ड्रेस तो सत्युग की है, Shri Lakshmi and बन तो भी रहे Narayan, they हैं exist ना। in the golden age. Their costume is संस्कार also अभी of the बन रहे golden हैं। age, but now तो here we पहले are making बताया our मन बुद्धि sanskars. संस्कार, So first is the mind, intellect, and then the मन में कोई sanskar. इच्छा नहीं, ममता नहीं। Let there be no attachment, no कैसे worry. बने लक्ष्मी नारायण? How to become Lakshmi and मन Narayan? में कोई इच्छा नहीं, कोई Let there be ममता no नहीं, desire, no attachment, no affection in the मुझे कुछ intellect. चाहिए नहीं, Let there be no desires. बुद्धि फ्री है, Let the intellect be free. बुद्धि योग। Let the intellect of yoga be connected मन with the योग नहीं one. कहते हैं, मन से योग नहीं We don't कहते say mind yoga, we say intellect हैं। मन yoga. को शांत कर। So we have to make कौन our कहते mind हैं, peaceful. शांत कर मन। भटकना लटकना छोड़ दे, It is said to the किसी का mind, आधा लेना छोड़ दे। stop taking support के बोली of में। anyone. Stop hanging in the चलते remembrance of चलते किसी को anyone. किसका सहारा चाहिए कि ये चाहिए, ये चाहिए। We should not depend upon any support. कौन बना? As today राजा Baba नहीं said in बनेगा। his Murli. वो राजयोगी नहीं है, Those who are dependent, they are not Rajyogis. मैं राजयोगी। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था, दादी प्रकाश बनी को पहले कुमार का दादी कहते थे। Before Dadi दादी कहते Prakash थे, Mani was कुमार called का as कहते Dadi थे। Kumarka. पीछे ब्रह्मा कुमारी भी नहीं कहते थे, राजयोगिनी प्रकाश बनी। She was not called as Brahma Rajyogini Kumari, but she was Prakashmani। called as Rajyogini Prakashmani. ऐसे नहीं, टाइटल नहीं है ये। It is not just an ordinary Practical life title. She had everything in her practical दादी को life. सदा ही नशा,
Daddy always और had the आज बाबा ने दीदी से जो intoxication. मुलाकात की है, ऐसा संगठन बनाओ, So Daddy always would tell, शक्ति संगठन बनाओ. make a Shakti army. संगठन बनता है, हमारा कोई किसके, सबकी अच्छी दृष्टिवृत्ति से, सच्चाई प्रेम से, अपनेपन की फीलिंग, So whenever we saw Daddy, we would have the सब बाबा की belongingness. Daddy had a great love and कहाँ से भी affection है, towards us. No और matter बाबा के बच्चे हैं, वो जो फीलिंग है who ना, came from which place, but all of Baba's children, and she had the feeling that everyone belongs to वही one. सदा फीलिंग समझते हो ना, So you understand what हाँ, is feeling. feeling. कोई भी और फीलिंग नहीं है. There was no other feeling. दिल इतनी खुश मजबूत है, The heart is happy, the heart is भले कोई strong. गुस्सा करे, कोई अच्छा, Even if anybody comes in भले कोई anger, कुछ, let us अपन we को remain quiet. तो बाबा जब Let we not बाबा be के दिनों में disturbed. दिल खुश मिठाई बाबा बना के खिलाता था. At Baba's time, Baba used to make a दिल खुश मिठाई delicious सबको dessert, अच्छी लगती है. and that was called as मैंने कहा Dilkush बाबा खाने में Mithai. अच्छी लगती So है, by कोई eating बना that के खिलावे sweet, ना. the heart used to be आप दिल खुश relaxed. मिठाई बनाना कौन जानता है? So who knows to make this delicious खाने sweet? में बड़ी अच्छी है. Because it is very sweet to eat. जो दिल खुश रखने वाला है, Dilkush is making ऐसी heart मिठाई happy. बनाता है. जो आवे खिला दो. So whoever comes, you सदा ही feed होवे. them with Dilkush. Make their heart फिर happy. बड़ा बाबा रखा हो, बनाई फिर साथ रखी, जो सामने आवे जैसे रुआन करो. So Baba always used to keep that sweet with क्या him. दिया, And whenever anybody came in front of Baba, so Baba gave them that toli, and Baba made everyone's heart happy. मिठाई भी मीठा भी है, दूध भी है, So in that sweet contains sweet, that is थोड़ा sugar, घी भी है, as सब well कुछ as है. ghee and milk. बनाने का ढंग जो है ना, But the way of साइज भी preparing जो है ना, should be known, एक्यूरेट. and it should be accurate. तो सारा दिन क्या काम करते हो? So throughout the day, what duty do you do? सेवा जो भी है करते भी. There are many service. तो दिल खुश मिठाई मेरे साथ है, You're all doing the तो service, बाबा चाहता and है if आपस में मिल करके you're एक having मिठाई का the sweet of नहीं making होगा. everyone happy, इतना बड़ा डब्बा भरा हुआ हो, कम से कम your heart should be fully filled with making everyone happy. फिर बाबा के दिनों की बात करती हूँ. बाबा टोलियों का हिसाब निकाला था, जो सदाई सस्ती अच्छी टोली की होनी चाहिए. So which is the cheapest मतलब toli? तोशा Baba जो once बनता है वो asked this question to the children. सबसे सस्ता है, Which is the पर most अच्छा है, cheap, हेल्दी है. very healthy and very sweet? Which is that toli? जब गिफ्ट देते हैं तोशा खिलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है तोशा. So when we give as a gift, बनाने we वाले को give अक्ल चाहिए तोशा. tosha, which is prepared in Madhuban. कहते सत्य के लिए तोशा बनाओ I अपना, like tosha very much, which is made out of wheat flour. प्रारब्ध बनाओ. भाई मैं तोशा बना, तो भले सेवा करते हैं, वो तो कर्मेंद्रियों द्वारा. We are doing service anyway. कर्म ऐसा करना है, While doing service, तो एक तरफ कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करें, the actions which we कर्मातीत बने. perform, सारा दिन
मुझे कर्मातीत should बनना be है an example in front of और कर्म others. भी ऐसा करना है I have to attain the तो karmatit स्थिति stage. कर्मातीत बने So before I attain the कर्म श्रेष्ठ karmatit बने stage, my karma should घर be जाने के लिए elevated. कर्मातीत से चाहिए To return सत्युग में back जाने के लिए home, श्रेष्ठ कर्म चाहिए my action, my karma should be समझ रहे हो ना elevated. To go to the नहीं golden दिखी age, पता to वो go to समझ नहीं रहे Satyug, घर our जाने के लिए karma कर्मातीत should be चाहिए elevated. सत्य में जाने लिए श्रेष्ठ To कर्म का return home, we should भंडारा attain the भरपूर हो गया ना karmatit stage. इतना श्रेष्ठ कर्म बाबा को देख फॉलो फादर करते So we have to follow the कर्म बड़े Father. बलवान है बाबा कहता है Karma टेढ़ा is रास्ता very हो सीधा great. कर दो ये नहीं कह रहा था टेढ़ा है तुम टेढ़ा Baba says the crooked path सीधा कर दो should also be made straight. इतना It is not that we say, कर्म Baba, अच्छी it है is ना anyway crooked. कोई खड्डे में गिर के पे चोट लग जावे मोच आ जावे ऐसे कर्म नहीं करने का है I should not perform karma in such a way that I myself fall into the हम pit. वतन में चले रहे हैं ना I get my हम ankles चले वतन sprained. के और खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की So now it is the डोर time to go and return क्या back कहाँ home. जा रहे हैं So क्यों जा now रहे हैं Baba's love, अरे प्रेम की डोर डाल के खींच रहा है the ना string of love is pulling towards बड़ी himself. खुशी की बात है उसका प्रेम His love is really जैसे wonderful. बताया था उसका प्यार उसका प्रेम स्नेह ऐसा है His love, his affection जो रूह में चला गया है is so ईश्वरी स्नेह great that it is absorbed in the soul. तो हम पहले पत्र लिखते थे ईश्वरी Earlier we used to write the letter प्यार स्वीकार हो as ईश्वरी स्नेह में संपन्न याद प्यार स्वीकार हो accept the love and उस टाइम देख के greetings मेरे अंदर in godly remembrance. ईश्वरी स्नेह So I have to check कभी खाली तो myself नहीं हो रहा है ना whether I am having that godly love. I should not be स्नेह ही empty. संपन्न बना रहा है Baba is समय making ऐसा us है full in love. जो करना है अब कर ले कल किसे दे Time is such that whatever we have to do, we have to do it now. जो करना Who है अब has कर ले seen कल tomorrow? देख किसे ने देखा जो अब किया Whatever we होगा want कल to कर do देंगे now, we have to do it now. Who has seen tomorrow? बीती बात को याद करना भूल है तो अभी अभी मिस करेंगे The past जिस should घड़ी not be बीती remembered. बात कोई याद आई है Anytime we remember about the past, that means we are gone. The present will be finished. Then what will you become in the future? बना दी है बीती को बीती Past is past. बीती को बीती देखो दुनिया को जीती न देखो Past is दुनिया past. जीती न Do not even see whether the world कोई is टोटके alive. ऐसे बाबा ने सुनाए हुए हैं And so there are many good puzzles which Baba had हाँ, explained. जो सद्दाम बाबा ये भी बाबा जो लिखता था ना सद्दाम शब्द जरूर रखो Whenever Baba used to tell us, Baba always used to mention the word सद्दाम always. खुश रहो आबाद रहो Remain happy, खुश रहो long live. न विसरो न याद करो Don't be separated, क्या न don't be विसरो, remembered. क्या न याद करो ये भी What बुद्धि to not to चाहिए। remember and what to not to be separated. जो बात बाबा की भूलना नहीं है Whatever Baba's भूलने words वाली are बातें there, याद that नहीं should not be करनी है। forgotten. And whatever Baba says to कितना अपने forget, आप that को should not be समझाने के लिए, remembered. सिखाने के लिए लायक बनने के लिए बाबा ने होमवर्क दिया है So Baba has given us the homework ऐसा अच्छा- to become worthy. ऐसा अच्छा बाबा है अच्छा आएगा क्या So बाबा such a sweet Baba he is. आएगा क्या भाई ये भी रेडी है और रेडी है ना So Brother Banu is also ever ready.
शुभ चिंतन की दवाई खाओ, बनो बेफिकर बादशाह। Eat the medicine की of दवाई giving खाओ, good wishes to बनो everyone बेफिकर and become a बादशाह। worryless शुभ emperor. चिंतक बन दुआ कमाओ, Become कर a well-wisher बाबा को and याद। claim blessings. शुभ चिंतक बन दुआ कमाओ, कर बाबा को याद। And रहो remember जी Baba. एवर हैप्पी हेल्दी वेल्दी, हैप्पी And हेल्दी remain ever वेल्दी। happy, रहो healthy, जी wealthy. एवर हैप्पी हेल्दी वेल्दी, हैप्पी हेल्दी वेल्दी। राजयोग से रोग मिटे और तन मन पावन होते, तन Let the मन disease be पावन removed होते। through Raj Yoga जीवन and let the कमल mind and body समान become उनके pure न्यारे प्यारे होते, and be detached and न्यारे loved like प्यारे a lotus होते। flower. विश्व एक परिवार लगता अपना ये संसार, And world becomes विश्व one एक family. परिवार लगता अपना ये संसार। दोष मिटा कर गुण अपना कर, दोष Let us मिटा not see कर the गुण defects of अपना कर, others. कर मन का Let us become उपचार। virtuous. शुभ चिंतक बन दुआ कमाओ, Let us कर become बाबा well-wishers को and याद। remember Baba. शुभ चिंतक बन दुआ Let us कमाओ, become कर well-wishers, बाबा earn को blessings याद। and रहो remember जी Baba. एवर हैप्पी हेल्दी वेल्दी, हैप्पी हेल्दी And वेल्दी। remain रहो ever जी happy, एवर healthy and हैप्पी wealthy. हेल्दी वेल्दी, हैप्पी हेल्दी वेल्दी। सबके प्रति हित भाव रखो और सबका हो कल्याण, Let me be generous to सबका हो everyone. कल्याण। कम धीरे व प्रेम से बोले, Let us यही speak अपनी sweetly, पहचान, यही अपनी And it is our पहचान। recognition. सेवा करो निस्वार्थ जग में, Do a करते selfless चलो service in the world उपकार। and uplift सेवा करो everyone. निस्वार्थ Do जग में, selfless करते service चलो and uplift उपकार। everyone. दुनिया का मालिक अपना है, The creator of the world is ours. दुनिया का मालिक अपना The है, creator हम of the क्यों world is करें ours. फरियाद। And why we have शुभ to चिंतक complain? बन दुआ कमाओ, कर Be a बाबा को well-wisher, याद। earn blessings शुभ and remember चिंतक Baba. बन दुआ कमाओ, कर बाबा को याद। रहो जी एवर And remain हैप्पी ever healthy, wealthy and happy. एवर हैप्पी हेल्दी। रहो जी एवर हैप्पी हेल्दी वेल्दी, हैप्पी हेल्दी वेल्दी।